Hello children, welcome to the channel Social Science with Dipankar. In this video today we are going to learn about industries from your class 8 geography textbook. So let's start. The topic, as I said, industries, we are going to discuss. The chapter I'm going to start with introduction. See, we have to understand what are secondary activities. Secondary activities are also called manufacturing. Okay. Let me just read it out, then I'll discuss with you. Change raw materials into products of more value. So what is manufacturing? Manufacturing is a process in which we change the raw materials into finished products. Thereby what we do, we add value to it. इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल से जो है हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से वैल्यू ऐड किया जाता है. क्योंकि बच्चों आपको मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे हम वीट फील्ड में ग्रो करते हैं, हम डायरेक्टली वीट को कंज्यूम नहीं करते हैं. वीट को पहले प्रोसेस किया जाता है, फ्लोर में चेंज होता है, आटे में चेंज होता है, फिर आटे के बाद उसको जो है उसका बिस्किट बनता है या ब्रेड बनता है. इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं. द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू. तो फिनिश प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है. एंड यूटिलिटी, उसकी यूजफुलनेस और बढ़ जाती है. उसकी जो यूटिलिटी है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो यूटिलिटी है दैट इंक्रीजेस. ओके, यूजफुलनेस. एंड it is more, it will have, after it becomes a finished product, it will have more usefulness, more utility than the raw material that it is made from, than the raw material than it is that it is made from. Okay, so here the word material has to be there. So the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from, because as a raw material that thing may not be of that value, but when we change them into finished product they have more value. Got it? Now let me tell you, we just don't add value when we convert a raw material into finished product. What we do, manufacturing also covers certain other aspects, like the quantity. We have to talk about manufacturing. We have to understand that it has to be produced in bulk, right? Plus we know that in this the raw material is processed into a finished product. First condition, thereby raw material is processed into finished product. Second condition is that it is added more value to, by way of manufacturing we are adding more value to it. And thirdly we would say that the production has to be in bulk. मतलब प्रोडक्शन जो है वो बल्क में होना चाहिए. ओके, इसके बाद ये अगला टर्म समझते हैं, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, the extraction of minerals or the provision of services. यहाँ पर इस डेफिनेशन का मतलब मैं बता देता हूँ कि जो इंडस्ट्री का अर्थ होता है कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो कि कंसर्न है किससे, जुड़ी हुई किससे, लिंक्ड किससे है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, राइट? गुड्स के प्रोडक्शन से, जैसे हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो माइनिंग के थ्रू जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू माइनिंग, राइट? तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग. फिर दूसरा पॉइंट में जिसमें कहा गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और तीसरे पॉइंट में जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट? जैसे हम अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो भी सर्विसेज, सेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई भी कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई भी जो है प्रोडक्ट के रिपेयरमेंट को लेकर भी सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडस्ट्री? इट इज क्लियरली स्टेटेड and clearly understandable that it is concerned with the production, it is concerned with the manufacturing of goods, and it is also concerned with mining and also with the provision of services. Okay, so children, अगला टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. कि इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई किया गया है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स है. सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. सो इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल्स के आधार पर भी क्लासीफाई करते हैं.
for example agro-based industries, yeah, mineral-based industries. So we can classify industries on the basis of raw materials also. Next is on the basis of size. Yes, on the basis of the capital investment we can also classify the industries, like large scale industries can be there, medium scale industries can be there, small scale industries can be there. And then the other criteria on the basis of which industries can be classified is on the basis of ownership, right? Like industries may be privately owned, private industries can be there can be government owned industries, right, public sector industries, or there may be such industries also which has partnership of both government and private, that is called joint sector industries. Apart from that we have also cooperative sector industries. So on the basis of these criteria industries are classified. I have given you the example also. If you have any doubts, any queries, you can send them or you can write them in the comment box. I'll definitely get back to you and provide you the possible solution, right? हम डिस्कस करेंगे बच्चों जो हमने अभी अभी बात की है कि what are the criteria on the basis of which industries can be classified. तो फर्स्ट क्राइटेरिया के आधार पर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज on the basis of raw materials. So on the basis of raw materials के आधार पर इंडस्ट्रीज कितने कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज है. तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल, जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हो सकता है. ओके, दूसरा जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल, जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर. इसी तरीके से जो है अगला जो है आपका इंडस्ट्री है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज. दे यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी. Okay, they use products from the sea and oceans as raw materials. Okay, next we have here in the list on the basis of raw materials. On the basis of raw materials we have this forest based industries which utilize forest produce as raw materials. So these are the types of industries on the basis of raw materials. आई वुड टेल यू टू गो. तो बच्चों अगला जो हमारे पास जो बेसिस है, क्राइटेरिया है, उसके जिसके आधार पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा रहा है, पिछले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आर इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स. ओके, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज are the industries where the products are manufactured by hands or by the artisans. Plus the next category is the large scale industries. These are the industries which produce large volume of products. Plus we know we have divided the industries on the basis of size. That means the amount of capital that is invested in these industries. In small scale industries the amount of capital invested is very low, whereas the amount of capital invested and the technology that is invested in the large scale industries, that is also superior, right, in the large scale industries. Whereas in the small scale industries the capital that is required is also low, plus the technology is also it is most generally manually done, or small machines may be used for manufacturing. Whereas in large scale industries large scale production can be done by using big machines and sophisticated technology, right. As a result, because of that only we would say that a lot of capital is required in large scale industries. So children, the next that we are going to discuss the industries on the basis of ownership. Okay, on the basis of ownership, the types of industries that we have written over here: private sector industries, owned and operated by. Here we have to understand this is owned and operated by an individual or group of individuals. Okay, private sector industries are those industries which are individually owned, or it may be an individual or it may be a group of individuals. They may be owning and operating it. Okay. Examples like Tisco, Bajaj, Reliance, these are the examples of private sector industries. Next we have is public sector industries, means government operated, government owned industries. We won't say that all the assets therein would be owned and controlled by the government only. Most of the assets in public sector industries will be owned by the government only, right.
here we say the examples are there, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेल। तो यहाँ आप ये चीज़ समझिए कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एसेट्स है वो ओन की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा ही, राइट। गवर्नमेंट इसको ओन करती है तो इसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, अगला जो सेक्टर है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय the joint sector industries are owned and operated by public and private partnerships, right? So when the government and individual, when the state and individual jointly own and operate, right, the industries, those fall under joint sector industries. For example, Oil India Limited. Next we have is the cooperative sector. It's very interesting to note. Let us understand this. Cooperative sector industries owned and operated by the producers or suppliers of raw materials. Those who are producing the raw materials, like the farmers, okay, and the suppliers of raw materials, okay, producers and suppliers of raw materials, workers or both. The workers, the mill workers, they are there. And the example for such kind of industry is sugar industry, as in Maharashtra or in UP, and we have examples of cooperative sector industries, the coir industries in Kerala. Okay, so these industries are very clear to you, I hope. If there is any question, so the next topic we are going to discuss, children, what are the factors that affect the location of an industry? मीन्स ऐसे कौन से फेवरेबल कंडीशंस है या ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो किसी इंडस्ट्रीज को, किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो आइए समझते हैं। दी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सबसे पहला कंडीशन है कि कहीं पे भी जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ताकि उस रॉ मटेरियल को एक्सेस करने में कम खर्चा है। मेनली आप ये चीज़ देखेंगे कि दी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर हम भी कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर लोकेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो देयर, वाटर इज टू बी ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेबर शुड बी देयर। लेबर में भी कैटेगरीज हो गई, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। हमें मजदूर भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, जिसमें लो स्किल वर्कर भी चाहिए, राइट। उनको ट्रेनिंग देके फिर हम उसको स्किल्ड बनाते हैं। तो दोनों तरह के लेबर हैं, और एजुकेटेड पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट, to manage the affairs of the industry. So labor will be of two types, skilled and unskilled. Next, we also require power, okay, where there is a supply of power, uninterrupted supply of power, of course, and capital is all the more important, of course. Without capital no economic activity can be carried out. Capital का मतलब होता है money, राइट। बिना मनी के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो की नहीं जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत, जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं ये उसमें सबसे ज़्यादा वाइटल फैक्टर है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए, ये भी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी रहेगी, वहाँ पर इंडस्ट्री लोकेट होंगी। और नियरनेस टू मार्केट, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट अच्छी है तो मार्केट अगर दूर भी है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज ऐसे इलाके में लोकेट होना चाहेंगे जहां मार्केट पास हो। तो हम कई बार ये देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लोकेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है फैक्टर्स एक ही जगह अवेलेबल होंगे। तो मैक्सिमम ऑफ फैक्टर्स जहाँ पे भी अवेलेबल होंगे वहाँ इंडस्ट्रीज के लोकेट होने के ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे। ओके, अगला पॉइंट मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है द गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप करके SEZs बनाए। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अंडर दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्या करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज पावर मतलब कम दामों पे बिजली प्रोवाइड कर देती है, लोअर ट्रांसपोर्टेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकती है। इस तरह के इंसेंटिव्स, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनको अवेल करा सकती है। और दूसरे जो भी ज़रूरत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी फैसिलिटीज़, लाइक अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की हो या ट्रांसपोर्ट की, अगर आप देखते हैं यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की गई है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और भी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, या अगर हम बात करते हैं कि
किस तरह से मार्केट में हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, उसको क्या हम मार्केट में आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे, तो क्या हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको समझिए कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी इज ए वेरी वेरी important and determining factor for any industries to locate there. If suppose the industrialists, those who want to locate their industry in some places, primarily they will see the government policies over there. If the government policies are very favorable, of course they are going to locate the industry over there. And if there is too much paperwork, if there is too much formality, if there is too much checkpoints, of course checkpoints should be there. I'm not saying that there shouldn't be any checkpoints, they should not follow any laws, right? It is true that there should be checkpoints, but if there are more number of unnecessary checkpoints, that could be avoided. If they are there, in that case the industrialists would be running away from that country. If there are too many restrictions, if there are too many laws, if there are too many hassles there in locating the industry. Plus let me also tell you, industrialization where if in any place industries कहीं पे अगर सेटअप होती है, तो इससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन भी होने लगती है, राइट? तो आप ये देखोगे कि ओवरऑल जो है, आप ये देखोगे कि कहीं अगर इंडस्ट्री लोकेट होती है तो उसके आसपास अगर आप देखेंगे कई सारे लोग आसपास से भी जाकर वहाँ इंडस्ट्रीज में काम करने लगते हैं, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और फिर उसके बाद जो है उनकी डिमांड्स बढ़ने लगती है, सारी चीज़ें होती है, सुविधाएं बढ़ने लगती है। तो यानी कि अर्बनाइजेशन से एक तरह से देखा जाए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो मे लीड टू industrialization. Both are complementary to each other. Sometimes urban centers lead to the setting up of agglomeration economy. जहाँ अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगती है, वहाँ पर आसपास चारों ओर इंडस्ट्रीज बहुत तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आ जाती है, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज है, तो इस तरह के लीगल सर्विसेज है, ये सब प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है तो कॉस्ट। Cost is the most determining factor for any industry to locate. Cost of production, cost of manufacturing, yeah, cost of transportation, right? Along with that, the government policy is there, of course, plus the decision to locate an industry. I mean, whether a person would want to locate that industry over there or not will depend on these factors, of course, that we have discussed in detail. So children, I hope things are clear to you. In this video, I am not going to provide you any PDF. In the next video that I'm going to make, the second video, in that I'll be completing the whole chapter. This is just a part of the chapter. The next topics that come under this chapter will be discussed in the next video only, and in that I'll be providing you the PDF and the question answers and the important exercises. They will be provided in the link. Okay, so next let me tell you, do watch the complete video, and if you are new on the channel, please subscribe the channel also and do like and share. Okay, thank you so much for being with me. Thank you for and please do wait for the upcoming video also for the second part explanation. Thank you so much.